Chief Minister Naveen Patnaik has also condoled the horrific train accident. Well, Chief Minister Naveen Patnaik has declared one-day state mourning in view of the horrific train crash. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot. So on your screens, live visuals coming in from the Balasore. So you can see Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw has been briefed about the accident and he is taking stock of the accident. He has already reached Balasore. So 233 people have lost their life and 120 bodies recovered so far. So Ashwini Vaishnaw there, the Union Railway Minister, talking to the officials involved at the rescue operation. He is taking stock of the situation there. And on your screens are the live visuals coming in from Balasore. एक मिनट पहले आने दो। आपको आराम से देंगे। चल एक भाई साइड विजिट करने दीजिए। भाई साइड विजिट करने दीजिए। हाँ अच्छी अच्छी। हाँ So 6 teams of NDRF, they are on the job as the rescue operations are going on in full swing since last night. As you have seen, Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw has already reached the accident site. He is at the spot at this point in time. He is taking stock of the situation. He is speaking to the officials involved at the rescue operation. So live visuals on your screens coming in from Balasore. So Ashwini Vaishnaw there taking stock of the situation and speaking to the officials. आगे जाके ले आगे
Well, also let me tell our viewers here that the Odisha government has issued a helpline number. So let me read out the helpline numbers here. 06782262286. Well, the railway helplines number are 03326382217 for Howrah, 8972073925 for Kharagpur, 824959155 Balasore, and 04425330952 Chennai. So the Odisha government has issued helpline number 06782262286. I repeat, 06782262286. And as per the latest inputs that we are getting in, at least 51 trains were diverted and cancelled after the accident. So Odisha government declares 1 day state mourning, and it is one of the deadliest accidents. So there you can see the rescue operations are underway. 6 teams of NDRF are on the job since last night, and as we already seen, Union Railway Minister Ashwini Vaishnav, he is at the site at this point in time. He is taking stock of the situation, and 120 bodies have been recovered so far. Rescue operations are underway, so more bodies will be recovered soon. But 233 people have lost their lives, and 900 people, they are injured. They are admitted to the nearby hospitals, and treatment is going on at this point in time. Well, 900 people are injured in the accident. So 4 units of the Odisha Disaster Rapid Action Force are on their job along with the 6 teams of the NDRF. So the accident happened at around 7 p.m. last evening, where 233 people have already lost their lives. So on the right side of your screens are the visuals from last night after the accident. So there you can see the Odisha Fire and Disaster team. They are taking the injured persons to the nearby hospitals. So on the left side of your screens are the live visuals coming in from Balasore in Odisha, and on the right side of your screens are the visuals from last night when the accident happened.
All right, you know more. We are being joined over phone line with our editor-in-chief, Wasbir Hussain. So, Wasbir, one of India's worst train tragedies, 233 people already lost their lives and 900 injured. Wasbir. Absolutely, Priya. This is one of India's worst train tragedies. Three trains colliding with each other, crashing in Balasore. This is not very far from Calcutta. This is 170 to 200 kilometers from Calcutta. This is one of the shocking train tragedies in India. Now, it has raised several questions. A lot of people are asking the questions whether there were anti-collision devices were fitted on the trains or not, whether the gadgets were there in the trains or not. These are something which an investigation is going to answer. And of course, the railway minister is there at the spot right now on your screens. The railway minister, Ashwini Vaishnav. These are live visuals on our screen coming in from Balasore in Odisha. So this has shocked everybody at this juncture because India has not seen such a massive train disaster, train accident in a long time. And now this here comes this three trains colliding, crashing, and falling on each other. So this is absolutely shocking. And there are at least few people from Assam who have survived, and we don't know whether there are any casualties from the northeast. We yet don't know, and the figures are indeed high. 233 and counting. Some reports say that already 250 people have died, but we will stick to the official figure, 233 dead. Till a short while ago, that was the figure given out by the Chief Secretary of Odisha, and more than 900 others were wounded. This is absolutely one of India's worst train tragedies. And everybody has condoled, right from the Prime Minister to Assam Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sharma, have condoled and expressed their anguish over the train disasters. And Odisha is gone for a one-day state mourning, and same is the case with Tamil Yes, Nadu. Wasbir, we are getting live reactions from the railway minister. Let's listen in. बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई वो समझा जाएगा। क्या कोई इंडिकेशन अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज पे। बड़ा हादसे में ये क्या है आपका विपक्ष आपके इस्तीफे की मांग कर रहा है, कैसे देखते हैं इसको? की तरफ से आपकी इस्तीफे की मांग की गई है सर। ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं
उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ। सर एक अहम सवाल, कब तक ये रूट जो है फिर से ठीक हो जाएगा सर? कब तक संभावना हो पाएगी यहाँ पर? रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके शोरूम में खड़ी है अभी। ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डीरेलमेंट हुई उसके बाद टक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चला। किसी का नेग्लिजेंस मिला है सर? किसी का नेग्लिजेंस अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चला। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है। उसी नंबर को आप लिखे जाए। किसी को सबोताज लग रहा है सर? सबोताज इसके पीछे? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें। सर आपने क्या देखा, अभी भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं? जानकारी आपको रही है, अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान। अश्विनी जी, अभी तक का सबसे बड़ा हादसा है, क्या रेलवे इसकी जिम्मेदारी ले रहा है? मैंने कहा पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल्ड में। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में घोषित कर दी गई थी। कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, तो कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी। All right, so Wasbir, so that was Union Railway Minister. Well, he said that a high-level committee has already been formed to probe the accident. Well, yes, that is what Ashwini Vaishnav is saying. There are a lot of opposition parties, leaders, including Mamata Banerjee, has been baying for his blood. They have been demanding his resignation. They are citing the instance of earlier Railway Minister Lal Bahadur Shastri resigning after a train accident, so on and so forth. But Ashwini Vaishnav is now saying that in this kind of a situation, when there is such a massive train disaster, train tragedy, the focus should be on relief and rescue operations, on treatment of those injured, and to make sure that those who have lost their loved ones, the bodies reaches home safely. He says the priority of the authorities now is to see that those injured are treated in the best possible medical care is received, as given to them, provided to them. That should be the focus. And secondly, he's saying that the focus should be to see that the bodies of all the loved ones of those people reaches their respective homes safely. So that is what is focus of the railway minister. He's tried to deflect that question. He has not answered the question what action he personally is planning, but that's a different story. But he has said that a high-level inquiry has been ordered, and all those details, whether the collision took place first, whether the derailment took place first, and then the other train came and collided, all these things will be known after the inquiry report comes into the fore. But basically, what he's also saying that all the train track restoration equipment, the sophisticated rail track restoration equipment are being deployed. And as soon as the district administration in Balasore gives clearance, the work for restoration of the trains will be done. About 50 trains in the Indian Railways have cancelled or diverted. Around more than 50 trains have been cancelled, and several dozens of trains have been diverted following this horrific incident in Balasore. This has already been described as one of the deadliest. There's the word being used. This has already been described as one of the deadliest train disasters in India's rail history. So this is a shocking incident, as the visuals themselves on the screen displays. The visuals explain for itself the horrific nature of the train tragedy. And let me also tell you that several people from Assam have survived this crash.
They have put out videos on their own. We have also played one of the videos, one of the guy names of a man, young man named Deepak from Biswanath Sariali. So he has said that he is safe. He has injuries on his hand a little bit, but he is absolutely out of danger. He has put out the video himself. But we don't know whether how many people from the northeast were there on this train, on these trains, and what is their fate. We get to know slowly. Northeast Live is trying to track down people from the northeast who may be involved in this train accident. Priya. Yes. So, Vasveer, on one hand, the flagging of Vande Bharat Express is taking place, and just few days back, Prime Minister Narendra Modi flagged up Vande Bharat Express, and on the other hand, such deadliest accidents taking place. You see, Priya, accidents are accidents. Even in very, very developed Western countries, also train accidents take place. There has been no train accident of this magnitude witnessed in India for a long, long time. And of course, Vande Bharat is a highly sophisticated train, state-of-the-art equipment. That is a separate show. We cannot link up that on the one hand you are launching Vande Bharat train and why should an accident take place? We cannot raise, that's not be a logical question to raise. But basically what the Indian Railways need is to modernize, this to focus on modernization, which is being done. But modernization of the existing trains, not Vande Bharat, it's already a sophisticated train, but modernization of running trains, express trains needs to be the focus. And one is to, the investigation will reveal whether there has been talk of anti-collision devices being put in every passenger train. Whether or not these anti-collision devices were there or not, we don't know. And only an investigation is going to reveal. Yeah. Right. Vasveer, thank you so much for all those details, viewers. So, as you have heard, Union Railway Minister talking to the media said the high-level committee has been formed to probe the accident, but the main focus at this point in time is the relief and rescue operations. He also said that Ashwini Vaishnav said while speaking to the reporters that at this point in time, the main focus should be that the injured person gets the best treatment, and the bodies, there were 120 bodies have been recovered so far, so the bodies reach home safely. So this is the main concern, this is the main focus of the railway authorities at this point in time. And also let me tell our viewers here that the railway ministry announced ex gratia of rupees 10 lakh to the next of kin of those who died. So rescue operations is underway at this point in time. So now it's time for a very short break. Stay tuned, I'll be right back with more updates on this massive accident in Balasore. ৰিংকি তুমি অলপ নিজে কৰি পেলাই এইটো কোৱেশ্চন একদম ইললজিকেল আছিলে আই থট কি সৰে মেবি সিহঁতক সুধিব দিছে এইকাৰণে আই আস্কড বাট সৰে নিজে ক'লে ইললজিকেল বুলি All right, so at least 233 people have died so far and over 900 injured in the horrific train accident in Odisha's Balasore last evening. And Union Railway Minister Ashwini Vaishnav, he is at the accident site at this point in time where you have heard while talking to the reporters, he said that the main focus now is at the relief and rescue operations. Well, he said that now the priority is that the injured persons who were admitted at the hospital, they get the best treatment, and the bodies, as I've already mentioned, that 120 bodies have been recovered so far. So the bodies should reach their homes safely. So this is the main concern. This is the main focus of the railway ministry at this point in time. And also, let me tell our viewers here that ex gratia, the railway ministry announced ex gratia of rupees 10 lakh to the next of kin of those who died. Well, meanwhile, we got to know that one of the passengers from Tezpur in Assam, he was there, but
Luckily, fortunately, he is safe at this point in time. We have heard his reaction, and we are trying to find out is any more people were there from Northeast. We are trying to find out. We at Northeast Live, we are giving you minute-to-minute updates, and we are also tracking down are there more people involved from the Northeast, and how's their condition? If yes, then how's their condition at this point in time? But on your screens are the live visuals coming in. So rescue operations are going on in full swing. 6 teams of NDRF, they are on their job. They are carrying out the rescue operations. 120 bodies recovered so far. All right. So Ashwini Vaishnav, they're talking to the officials and all right, so he already spoke to the media. So Ashwini Vaishnav already spoke to the media. He said that it is one of the horrific accidents that ever took place in India. And he is taking stock of the situation. He is right there at the accident site. So police officials and DRF, they are on their job. So one-day state mourning has also been announced by Odisha Chief Minister Naveen Patnaik. So Railway Ministry orders probe into the Odisha train accident. As we already heard Ashwini Vaishnav saying that a high-level committee has already been formed, and after the inquiry only it will come out whose negligence it was, and after that action will be taken. But the focus, as we already heard, focus and the priority at this point in time should be on the rescue operations and on the patients, the injured persons who are admitted at various hospitals, nearby hospital at the Balasore railway station. So they are undergoing treatment. So they should get the best treatment. So this should be the main priority at this point in time, as set by Union Railway Minister Ashwini Vaishnav. So, in one of the worst railway disasters in India, at least 233 people were killed and more than 900 injured when 3 trains collided one after another in a horrific sequence in Odisha's Balasore district. So, massive rescue and evacuation process is underway at this point in time. And more than 900 people, they are injured and they are admitted to the nearby hospitals, and they are getting so already being termed as one of the worst train mishaps in recent times. So what are the other rail accidents that took place in recent times that grabbed all the headlines? So let's take a look at that. Well, on July 7th, 2011, Chapra Mathura Express collided with a bus near Etah district in Uttar Pradesh. Well, 69 people died and many were severely injured. On July 30th, 2012, a coach of the Delhi Chennai Tamil Nadu Express caught fire near Nellore, killing more than 30 people. And on May 26, 2014, in the Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh, the Gorakhadham Express, which was headed towards Gorakhpur,
collided with a halted goods train in Khalilabad station. Well, 25 were killed and over 50 injured. And on March 20th, 2015, Janata Express from Dehradun to Varanasi derailed near Bachrawan railway station in Raebareli in Uttar Pradesh. So over 30 people were killed and around 150 others were injured in that incident. So we were speaking strictly in terms of the death toll, which currently stands at 233 and is feared to rise even further. This can be termed as the worst and most tragic train accident in India in recent memory. So after the accident, around 51 trains, in fact more than 50 trains diverted, cancelled. And leaders cutting across the political spectrum as well as from across the country have condoled the tragic loss of lives in what is being termed as one of the India's worst and deadliest train tragedies. All right, so you have President of India, Draupadi Murmu, taking to Twitter. She said that deeply anguished to know about the loss of lives in an unfortunate rail accident in Balasore, Odisha. My heart goes out to the bereaved families. I pray for the success of rescue operations and quick recovery of the injured. So this is what the president tweeted. All right, so we also have Prime Minister Narendra Modi also taking to Twitter. He wrote, and I quote, well, distress by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister Ashwini Vaishnaw and took stock of the situation. Rescue operations are underway at the site of the mishap, and all possible assistance is being given to those affected. Well, Home Minister Amit Shah has also tweeted and expressed his grief. Well, the train accident at Balasore in Odisha is deeply agonizing. Well, the NDRF team has already reached the accident site and other teams are also rushing to join the rescue operation. My condolences to the bereaved families and praying for the speedy recovery of those injured. Meanwhile, Congress leader Malika Arjun Kharge also took to Twitter. He said, and I quote, well, deeply saddened by the terrible train tragedy involving Coromandel Express in Odisha, our thoughts and prayers are with the victims. We urge the authorities to expedite rescue operations and provide relief to the injured. Request Congress workers to provide all possible help. All right, so Rahul Gandhi has also tweeted, well, anguished by the tragic news of the accident involving the Coromandel Express in Balasore, Odisha. My heart goes out to the bereaved families, wishing for the speedy recovery of those injured. I urge Congress workers and leaders to extend all support needed for rescue efforts. And Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has also taken to Twitter, as you can see on your screens. Well, Himanta Biswa Sharma, the Chief Minister of Assam, while taking to Twitter, he wrote, and I quote, well, anguished by the train accident in Odisha and loss of precious lives. Words can't describe the pain of those who lost their loved ones. My deepest condolences to the families of the deceased and prayers for speedy recovery of those injured. Well, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has also taken to Twitter and expressed his condolences for the bereaved families. Well, so rescue operations are underway at this point in time, and political parties cutting across party lines, they have tweeted, they have taken to Twitter and expressed their condolences regarding this deadliest train accident that happened last evening. And meanwhile, Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw has announced an ex gratia of rupees 10 lakhs in case of death, rupees 2 lakhs for those grievously injured, and rupees 50,000 for those with minor injuries.
And leaders cutting across the political spectrum as well as from across the world have condoled the tragic loss of lives in what is being termed as one of the India's worst train tragedies. Well, Canadian Prime Minister Justin Trudeau has extended condolences to the train tragedy in Odisha. Trudeau tweeted, "The images and reports of the train crash in Odisha, India, break my heart. I am sending my deepest condolences to those who lost loved ones, and I'm keeping the injured in my thoughts. At this difficult time, Canadians are standing with the people of India." Meanwhile, Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal has expressed grief over the loss of lives in the tragic accident in Odisha. Well, meanwhile, in a human touch, volunteers have turned up at the district hospital in Bhadrak to donate blood for the people injured in the train accident. So, as you can see on your screen, volunteers have turned up at the district hospital in Bhadrak to donate blood for the injured people in the train accident, as 900 people they have been injured and they are at the hospitals at this point in time. So volunteers they voluntarily they went to the hospital to donate blood. So we are giving you minute-to-minute updates from the Balasore accident site, and we are trying to find out if anyone there are from any people from Northeast. As we already came to know that one person from Tezpur, he was there during the in the train when the accident took place, but fortunately he is safe now. But we are trying to find out is any more people involved from the entire Northeast who was in the train during the accident. Well, Railways Minister Ashwini Vaishnaw has reached the accident spot at Balasore where three trains collided last evening, claiming the lives of 233 people and injuring around 900. The Railways Minister took stock of the situation at the accident site where search and rescue operations is underway. Well, speaking to the media, the railway minister said that it's a big tragic accident. Railway, NDRF, SDRF, and state government are conducting rescue operations. Best possible healthcare facilities will be provided. Ashwini said the focus is on rescue and relief operations at this point in time, and restoration will begin after clearance from district administration. And a detailed high-level inquiry will be conducted, and the Rail Safety Commissioner will also do an independent inquiry. So let's listen into Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw once again. बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है, इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज पे। बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें
रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है अभी। ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। इंक्वायरी के बाद Mm. All right, so rescue and search operations are underway at this point in time. At least 233 people have died and over 900 were injured in a horrific train accident in Odisha's Balasore last evening after a collision occurred between the Coromandel Express and the Bangalore-Howrah Superfast Express. The Coromandel Express operates between Bengal's Shalimar station in West Bengal and Chennai. Well, there are search and rescue operations are underway at this point in time. Well, 6 teams of NTRF, teams of STRF, and fire department they are involved in the search and rescue operations. Well, Union Railway Minister Ashwini Vaishnav is already at the spot, and while speaking to the reporters, he said that high-level committee has been formed, but the main focus, the main priority at this point in time should be the the about the rescue operation and the patients, the people who are admitted at various hospitals. All right, we are getting live reactions, I guess, from the accident site, so let's try to listen in. Arrest rescue teams are they are on their job, and so far 120 bodies, so as per the latest inputs, 120 bodies have been recovered so far. Rescue operations are underway, and over 900 people they're injured and they're admitted at the hospitals. So on your screens are the live visuals. We are giving you minute to minute updates from the accident site in Balasore in Odisha. Well, Union Railway Minister Ashwini Vaishnav is right there taking stock of the situation. He is talking to the officials, and he also said that the main concern and the main priority at this point in time should be on the rescue operations, as and more than 900 people they are injured. They are admitted to the hospital. Not only this,
The death toll may also rise as 233 people have already lost their life. Death toll may also rise as the rescue operations are still underway and over 900 people, they are admitted at the hospital. We don't know how's their condition, but as per Ashwini Vaishnav, he said that the injured persons will get the best treatment as the focus should be on the rescue and the treatment of the injured at this point in time. And a high level inquiry has already been formed. And after the rescue operations, the reason of the accident will be found out. A probe, he has ordered for a high level probe, and an independent inquiry will also be done by the railway officials. Well, two Bangalore bound trains scheduled to depart from Howrah were cancelled after the accident. Meanwhile, four trains were diverted. While two of the diverted trains were heading from Bangalore to Howrah, one running from Bangalore to Agartala, and the fourth one was running between Vasco da Gama and Shalimar. Well, the diversion has left several passengers stranded at stations. Several bodies are still trapped under the debris of train coaches after the accident. As of now, bodies of passengers are being recovered from the part where the Coromandel Express collided with the goods train. Army officials have joined the rescue operations in Odisha's Balasore. So, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav orders high-level probe into the Odisha train accident. So, Congress leader Rahul Gandhi, AICC President Mallikarjun Kharge have urged Congress workers to provide all possible help to the victims. Congress chief Mallikarjun Kharge tweeted about the train collision in Odisha's Balasore and urged authorities to expedite rescue operations. All right, so Railway Minister Ashwini Vaishnav has reached the spot at Balasore where he also spoke to the reporters where three trains collided last evening, claiming the lives of 233 people and injuring around 900 people. So, indeed, it is one of the deadliest train accidents that ever happened in India. Well, the railway minister took stock of the situation at the accident site where search and rescue operation is underway. Well, as you can see on your screens are the live visuals coming in from the Balasore accident site in Odisha. The rescue operation, the search operation is going on at this point in time. The army officials, six teams of NTRF, SDRF, everyone, they are involved in the search and rescue operation. So far, only 120 bodies have been recovered, but 233 people have already lost their lives, and 900 people, they're undergoing treatment at hospitals. Well, speaking to media, the railway minister said it's a big tragic accident. Railway, NDRF, SDRF, and state government are conducting rescue operation. Best possible healthcare facilities will be provided. Ashwini said focus is on rescue and relief operations at this point in time, and restoration will begin after clearance from district administration, and a detailed high-level inquiry will be conducted, and the Rail Safety Commissioner will also do an independent inquiry. And meanwhile, Union Railway Minister Ashwini Vaishnav announced an ex gratia of rupees 10 lakhs in case of deaths, rupees 2 lakhs for those grievously injured, and rupees 50,000 for those with minor injuries. बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है, इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे
किस किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है, जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा, जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। उसके बाद चक्कर हुआ, इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। So, as you've heard, the Union Railway Minister saying that should be now on the rescue and relief operations. Restoration will begin after clearance from district administration. Meanwhile, a detailed high-level inquiry will be conducted, and the Rail Safety Commissioner will also do an independent inquiry. Union Railway Minister Ashwini Vaishnav said, as we've already heard. And meanwhile, we are also getting reactions from Odisha Chief Secretary. So let's listen in. Latest situation of the train accident is like this. So far, around 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in Baleswar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jashpur, and Cuttack districts, including in the two medical colleges of Cuttack and Baleswar. And so far, we have got reports of 233 deaths. 233 dead bodies have been recovered. And the search and rescue operation is still going on. And we have reactions from passengers. Let's listen in. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern. मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था। ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है। ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। Meanwhile, Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has condoled the horrific train accident. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot. And we're also getting reactions from the rescue workers involved in the accident site. यहाँ पे सब लगे हुए हैं कल रात से, और दोनों एक साथ मिलके ही काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए, कल रात से लगे हुए। अभी कॉलम आ रही है कलकत्ता से। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर, और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं, और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है, और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं, और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है, देखते हुए, क्योंकि मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है। हो जाएगा जल्दी। ये मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए वो जा रही थी, तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए, और डिरेल होके ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रेंच कर गए। उसके थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है, वो
आ रही थी, उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रेंच ट्रैक था उस पे। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए। ये इस वक्त रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटा हुआ है। कैजुअलिटीज का अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ सीरियस इंजरीज हुई हैं। सहायता नंबर इशू किया गया है। हावड़ा का जो हेल्पलाइन नंबर है वो लैंडलाइन नंबर 26382217, एंड देन खड़गपुर के मोबाइल नंबर्स हैं 8972073925। खड़गपुर का दूसरा है 9332392339। ऐसे ही बालेश्वर के 2 नंबर हैं 8249591559, देन दूसरा 7978418322। शालीमार का जो हेल्पलाइन नंबर है 9903370746। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। उड़ीसा में हुए रेल हादसे की घटना के संबंध में हम लोग किसी भी प्रकार की सहायता, तमिलनाडु से आने वाले लोग जो उस रेल में सफर कर रहे थे, उनको परिवारों को किसी भी प्रकार की जो सहायता चाहिए उसके लिए तमिलनाडु सरकार ने इंतजामात किए हैं। हम लोग रेलवे और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में उड़ीसा के अधिकारियों से बात करके हमारे स्तर पर जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो देने के लिए तैयार हैं। आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 को निकाले सब। बहुत लोग इधर थे और वो आवाज मतलब जंगल ही हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए, ऐसा हुआ है। प्रशासन को और थोड़ा अच्छा से करने के लिए पड़ेगा। Meanwhile, we are getting reactions from TMC MP Dola Sen, who said West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee will be visiting the site today. 2 passenger trains, one हावड़ा जसवंतपुर, हावड़ा से बेंगलुरु की जुड़ा हुआ, और दूसरा चेन्नई से शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस। फुल जैम पैक, तो 3000-4000 तो 2 पैसेंजर ट्रेन में ही होगा, उसके साथ साथ गुड्स ट्रेन भी था। तीनों का कॉलिशन हुआ और अब देख रहे हैं 20-25 बॉगी पूरा इधर उधर हो गए। इट्स अ टू ट्रेजिक एन इंसिडेंट एंड कुछ कहना नहीं जाता। देखने में वी आर शॉक्ड, रियली वी आर शॉक्ड। आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज आल्सो शॉक्ड। So, already being termed as one of the worst train mishaps in recent times. So, what are the other rail accidents that took place in recent times that grabbed all the headlines? Well, on July 7th, 2011, Chapra Mathura Express collided with a bus near Etah district in Uttar Pradesh. 69 people died and many were severely injured. The accident took place at around 1:55 a.m. at the unmanned crossing. On July 30th, 2012, a coach of the Delhi Chennai Tamil Nadu Express caught fire near Nellore, killing more than 30 people. On May 26, 2014, in the Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh, the Gorakhdham Express, which was headed towards Gorakhpur, collided with a halted goods train in Khalilabad station. 25 killed, 50 injuries. Well, on March 20th, 2015, Janata Express from Dehradun to Varanasi derailed near
Bachwaran railway station in Raebareli in Uttar Pradesh. Over 30 people were killed and around 150 others injured. On November 20th, 2016, the Indore-Patna Express 19321 collided, killing at least 150 passengers and injuring more than 150. On August 19, 2017, the Kalinga Utkal Express running between Haridwar and Puri met with an accident near Khatauli in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. 14 bogies of the train derailed, killing 21 passengers, while 97 were left injured. On August 23rd, 2017, 9 train coaches of the Delhi-bound Kaifiat Express derailed near Auraiya, Uttar Pradesh, causing at least 70 injuries. And on January 13, 2022, at least 12 coaches of the Bikaner Guwahati Express derailed in West Bengal's Alipurdwar, killing 9 dead and leaving 36 others injured. So, viewers, speaking strictly in terms of the death toll, which currently stands at 237 and is feared to rise even further. This can be termed as the worst and most tragic train accident in India in recent memory. So, the breaking news at this point in time is the death toll has risen to 237. So, 237 people have lost their lives and over 900 were injured in an accident. The big breaking story at this point in time is that the death toll has risen to 237. So 120 bodies have been recovered so far. Rescue and search operations are underway in full swing at this point in time. 6 teams of NDRF, SDRF, and in fact, the army officials, they are involved at the search and rescue operations. And so far, 120 bodies have been recovered. But the breaking story at this point in time is that 237 people have lost their lives. So, indeed, a very tragic accident, a very tragic incident that took place last evening, where 237 people have already lost their lives. The death toll may even increase as the search and rescue operations are underway at this point in time. And 900 people, they are grievously injured. They are undergoing treatment at hospitals. Well, Union Railway Minister Ashwini Vaishnav visited the site. He is at the accident site in Balasore in Odisha at this point in time. He is taking stock of the situation. He is speaking to the officials who are involved and at the search and rescue operations. Well, 6 NDRF and SDRF teams, they are carrying out the rescue operation. So far, 120 bodies have been recovered. So we have also heard the railway minister speaking to the media said the main focus at this point in time should be on the relief and rescue operations. And 900 persons, as I've already mentioned, they are undergoing treatment at the hospital at this point in time. So they should get the best possible treatment. So this is what Ashwini Vaishnav said while speaking to the reporters. All right, so as I already mentioned, so breaking story at this point in time is that death toll has risen to 237. So over 900 injured. Rescue operation is on at this point in time. Multiple teams, they are carrying out the rescue operations. The big story at this point in time is that the death toll has increased to 237. The numbers may even rise as the rescue operations are underway, and 900 people, they are admitted at the hospital undergoing treatment. So death toll rises at 237. So rescue operations are on. Multiple teams, NDRF, SDRF, army officials, and they are carrying out the rescue operations at this point in time. And we don't know yet whether someone from the northeast was also there present during the accident. But we know is that one person from Tezpur, he was in the train Coromandel Express when the accident took place. But fortunately, he is safe now. We also heard his reactions few minutes back. And we are trying to find out if anyone else was there in the train when the horrific accident took place. We are giving you minute-to-minute updates from the Balasore accident site. So right now, the
search and rescue operations are underway, and that toll has increased to 237. Over 900 people injured. Rescue operations are still on. Multiple teams are on their job, and we are giving you minute-to-minute updates. And now we are trying to find out, is anyone from the Northeast are also there in the train during the accident? So the Railway Ministry announced ex gratia rupees 10 lakh to the next of kin of those who died. And in view of all the tragic rail accidents, Odisha Chief Minister Navin Patnaik has ordered for state mourning for a day, and hence no celebration will take place today throughout the day. One day state mourning has been announced due to the horrific accident that took place last evening. So, Railway Ministry orders probe into Odisha train accident, but the main focus, as per the Railway Minister Ashwini Vaishnav, the main focus at this point in time is that rescue and search operations should carry on smoothly. So, the NDRF, SDRF personnel, they are on the job. So, on your screens, so there you've seen Union Railway Minister Ashwini Vaishnav crawling out of the wreckage of. So he's taking stock of the situation. He's right there at the accident site. So visuals of Union Railway Minister Ashwini Vaishnav crawling out of the train wreckage. See, so he went inside the train and he took stock of the situation. So Ashwini Vaishnav there can see crawling out of the train wreckage. So indeed a very horrific accident took place. In fact, one of the deadliest accidents in India that ever happened. There you can see already 237 people have lost their lives, and the number may even rise as search and rescue operations are underway and 900 persons are injured. All right. So we are getting live visuals from the accident site. So there we can see Chief Minister of. All right. So Odisha Chief Minister Navin Patnaik is also there taking stock of the situation. So there you see Chief Minister of Odisha Navin Patnaik with Union Railway Minister Ashwini Vaishnav taking stock of the situation. And one day state mourning has already been declared by the Chief Minister of Odisha, Navin Patnaik. So right now, Odisha Chief Minister is with Union Railway Minister Ashwini Vaishnav and other officials taking stock of the situation. And they are also speaking to the personnel who are involved in the search and rescue operations. So search and rescue operations are going on in full swing. And so far, 120 bodies have been recovered. So live visuals on your screens. Odisha Chief Minister Navin Patnaik, along with Union Railway Minister Ashwini Vaishnav. So, as per the Odisha Chief Secretary, he said that the identified bodies, as already mentioned, that 120 bodies have been recovered from the accident site. So, the identified bodies are either being handed over to the relatives or transported to their respective destinations after autopsy. All right, so we are giving you minute-to-minute updates. We know that one person from the northeast, one person from Assam's Tezpur,
He was there during the accident site, but fortunately, luckily, he is safe at this point in time. We heard his reaction. He is safe, but now we are trying to find out, is anyone more people involved in the during the accident? Anyone from Northeast was also present. In fact, yes, so we are trying to find out, is anyone from the Northeast was present during the accident, and we are giving you minute to minute updates from the accident site in Balasore. So the latest at this point in time is that 237 persons they have already lost their life. 900 people, they are admitted in the hospital. They are grievously injured, and 120 bodies have been recovered so far, and rescue and search operations is going on in full swing. We are giving you minute to minute updates, so keep watching Northeast Live.
ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन हादसा, 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर, अब तक 280 लोगों की मौत, 9 से अधिक लोग घायल, अस्पतालों में मरीजों का तांता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे दुर्घटना स्थल, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा, घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश, मृतकों को 10 लाख मुआवजे का ऐलान। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेताओं ने ओडिशा की घटना पर जताया दुख, मृतक परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। संकट की घड़ी में भारत के साथ नेपाल और कनाडा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ट्वीट कर जताया दुख। विपक्ष ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का मांगा इस्तीफा, वैष्णव ने कहा यह समय राजनीति का नहीं, घटना में पीड़ितों की मदद करना पहली प्राथमिकता। और ओडिशा की घटना के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रमों को किया रद्द, मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन उद्घाटन स्थगित, ओडिशा में आज 1 दिवसीय राजकीय शोक, नहीं मनाया जाएगा कोई उत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 900 से अधिक लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। वहीं घटना के बाद आज सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। शुक्रवार शाम बालासोर के बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में कल 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है। वहीं जानकारी के मुताबिक SMVB हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की यह टक्कर हुई है। सबसे पहले हावड़ा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई, उसके बाद मालगाड़ी कोरोमंडल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। वहीं ट्रेन के कई डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक 7 डिब्बे पलट गए और 4 डिब्बे रेल बाउंड्री के बाहर चले गए, यानी इस दौरान कुल 15 बोगी बेपटरी हुए। इस दर्दनाक हादसे में 280 लोगों की मौत और 900 लोगों के घायल होने की जानकारी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। घायलों को सोरो CHC, गोपालपुर CHC और खाटापाड़ा PHC में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। राहत बचाव के लिए प्रशासन के साथ NDRF की 6 टीमें जुटी हुई हैं। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि करीब 50 एम्बुलेंस को लोगों को ले जाने के लिए लगाया गया है, लेकिन घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए बड़ी संख्या में अब बसें जुटाई जा रही हैं। ट्रेन हादसे के कई घायलों को सोरो, गोपालपुर और खाटापाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि कई लोगों को बालासोर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। और वहीं बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1 दिन के राजकीय शोक का आदेश दिया है। पूरे राज्य में आज कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ओडिशा के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इसकी जानकारी दी है। उधर अधिकारियों के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस दोपहर के 3:20 पर शालीमार स्टेशन छोड़ चुकी थी। वो शाम के 6:30 बजे बालासोर पहुंची थी। उधर से बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट के मुकाबले कोरोमंडल की स्पीड अधिक थी। जैसे ही दोनों ट्रेनें एक दूसरे के बगल से गुजर रही थी, इस दौरान बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट पटरी से उतर गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस को साइड से टक्कर मार दी। और इन तस्वीरों में दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह यह हादसा हुआ है और किस तरह कितनी भयावह वहां पर स्थिति रही होगी। जिस तरह से लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, जो घायल हैं उनका कहना है कि एक के ऊपर एक वे गिरते रहे और सभी तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ये दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ट्रेनें एक दूसरे से किस तरह से टकराई और किस तरह का वहां उस वक्त माहौल हुआ होगा। लोगों की चीख पुकार वहां पर मची हुई थी। और यहाँ जो यह दुर्घटना हुई है, इसमें 2 पैसेंजर ट्रेन थे और एक मालगाड़ी थी। और आमतौर पर जिस तरह से देखा जाता है, एक पैसेंजर ट्रेन में तकरीबन 3 से 4 हजार लोग
यात्री वहां पर रहते हैं। और इसी तरह अगर दोनों ट्रेनें टकराई हैं, अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बरामद किए जा रहे हैं, अभी भी शव निकाले जा रहे हैं। और इन सब के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का। और ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह का वहां माहौल रहा होगा, किस तरह का दर्दनाक माहौल वहां पर कल शाम यहां पर देखा गया है। आज भी और सुबह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर बचाव व रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तकरीबन 6 टीमें यहाँ पर जुटी हुई हैं। सिर्फ एनडीआरएफ ही नहीं बल्कि आर्मी, एसडीआरएफ और वायुसेना की तरफ से भी यहाँ पर बचाव व रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और इस दर्दनाक घटना के बाद वहां बचाव व रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए प्रशासन की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी तमाम सुविधाएं की जा रही है। वहां पर लोगों को निकालने की, जख्मियों को निकालने की और शवों को निकालने की जद्दोजहद आज भी इस वक्त भी जारी है। 900 से ज्यादा लोग यहाँ घायल हैं और जिस तरह से जानकारी सामने आई है, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 280 फिलहाल मृतक बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घायलों की संख्या ज्यादा होने की वजह से एम्बुलेंस की कमी पड़ रही है, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से बसों को वहां लाया गया। बसों के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और जिस तरह से वहां के हालात देखे जा रहे हैं, अस्पतालों में भी जख्मियों की भीड़ देखी जा रही है। अस्पतालों में इन घायलों का तांता लग चुका है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की वहां स्थिति रही है। 3 तस्वीरें हैं जहां एक तरफ आप देख सकते हैं कि बीती शाम हुई इस ट्रेन हादसे की किस तरह की स्थिति रही होगी। दूसरी तस्वीर है अस्पतालों में जद्दोजहद करते हुए घायलों को ले जाने की। और एक और तस्वीर जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद है और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उधर बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक का आदेश दिया है। पूरे राज्य में आज कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ओडिशा के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इसकी जानकारी दी है। उधर अधिकारियों के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस कल दोपहर लगभग 3:20 पर शालीमार स्टेशन छोड़ चुकी थी। वह शाम के 6:30 बजे बालासोर पहुंची थी। और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी इस दौरान वहां से गुजर रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट के मुकाबले कोरोमंडल की स्पीड अधिक बताई गई है। और जैसे ही ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के बगल से गुजरी, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस बेपटरी हो गई और साइड से कोरोमंडल को टक्कर मार दी, जिसके बाद मालगाड़ी यहां आ टकराई। ताजा जानकारी के अनुसार जिस तरह से यह ट्रेन चेन्नई से निकली थी, तो वहां के मुख्यमंत्री भी एम.के. स्टालिन वहां कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि वहां अब भी कितने लोग फंसे हुए हैं। और इसी के साथ आज 1 दिवसीय शोक का भी वहां ऐलान किया गया है। दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 तस्वीरें। एक तरफ जहां इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार यहां बचाव कार्य चलाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं
चेन्नई से, जहां एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन वहां पर जायजा ले रहे हैं स्थिति का। कंट्रोल रूम में वे मौजूद हैं और मीडिया के साथ वे बातचीत करने को तैयार हैं। और तीसरी तस्वीर देख सकते हैं कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और साथ ही रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं, बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। लगातार वहां बीती शाम से ही बचाव कार्य जारी है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बचाव कार्य जारी है और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 280 मृतकों की संख्या बताई जा रही है। दूसरी तरफ 900 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। ओडिशा में आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot. ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज इस दुर्घटना के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मौके पर सुबह से ही मौजूद हैं। लगातार वे स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, वहां फिलहाल बचाव कार्य जारी है। और सुनते हैं स्थिति का जायजा लेते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। इंक्वायरी के बाद में ही ரயில் மற்றும் ஒரு சரக்கு ரயில் மூன்றும் ஒடிசா மாநிலத்தில் பயங்கர விபத்துக்குள்ளாகி 230க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி வந்திருக்கிறது. நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்து ஆங்காங்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். நம் அனைவருக்கும் ஆழ்ந்த துயரத்தையும் வேதனையும் அளித்துள்ள இந்த பயங்கரமான விபத்து நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் பெரும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது.
இந்த விபத்து குறித்து கேள்விப்பட்டவுடன் நான் உடனடியாக நேற்று இரவு ஒடிசா மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு திரு நவீன் பட்நாயக் அவர்களோடு தொலைபேசியில பேசினேன். இது குறித்து என்னுடைய ஆழ்ந்த வருத்தத்தையும் வேதனையும் அவரிடம் தெரிவித்துக் கொண்டு அங்கு மீட்பு பணியில் ஏதேனும் உதவி தேவைப்பட்டால் தமிழக அரசின் சார்பில் அதை செய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை அவரிடத்திலே நான் தெரிவித்தேன். மேலும் தமிழ்நாடு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி அவர்களும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் அவர்களும் போக்குவரத்து துறையினுடைய செயலாளர், வருவாய்த்துறை செயலாளர் மற்றும் திருமதி அர்ச்சனா பட்நாயக் ஆகியோர் அங்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமில்லாமல் விபத்து நடந்த பாலசோர் பகுதியிலே அடுத்த 4 அல்லது 5 தினங்களில் தங்கியிருந்து மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் தொடர்ந்து ஒருங்கிணைத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய இந்திய ஆட்சிப்பணி அலுவலர்கள், இந்திய காவல் பணி அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் ஆகியோரும் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர். அங்குள்ள காவல்துறையினருடன் இணைந்து பணிகளை மேற்கொள்ள தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கூடுதல் காவல்துறை இயக்குனர் திரு சந்தீப் மிட்டல் ஐபிஎஸ் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஏற்கனவே விபத்து குறித்து பொதுமக்களுக்கு தகவல்கள் அளிக்க மாநில அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டு அறைகள் நேற்று இரவு முதல் துவங்கி அது செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. நான் தற்போது தென்னக ரயில்வேயின் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு சென்று அங்கு விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை தொடர்பு கொள்வதற்கும் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டு அறிந்து கொண்டேன். இந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு வந்து சேர முடியாதவர்களையும் பல ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால் விபத்து நடந்த இடத்திலிருந்து சென்னைக்கு திரும்ப இயலாதவர்களையும் அழைத்து வருவதற்கு சிறப்பு ரயில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கவும் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை கொண்டு வருவதற்கு தமிழக அரசு எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து வருகிறது. விபத்து குறித்த தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக மாநில கட்டுப்பாட்டு செல்போன் நம்பர் 944 तो लगातार हम यहाँ दर्शकों को दिखा रहे हैं बीती शाम जहाँ बालासोर में यह ट्रेन हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे के बाद किस तरह की वहाँ स्थिति है, बीती शाम से ही यहाँ बचाव कार्य जारी है। लगातार यहाँ सेना और एनडीआरएफ की टीमें अपना बचाव अभियान चला रही हैं। लोगों को बाहर निकालने की यहाँ जद्दोजहद जारी है। टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पे सब लगे हुए हैं कल रात से और दोनों एक साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। लगातार लगे हुए, कल रात से लगे हुए। अभी कॉलम आ रही है कलकत्ता से। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर, और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है, और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं, और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है, देखते हुए कि मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है। हो जाएगा जल्दी।
और इन सबके बीच उड़ीसा के मुख्य सचिव ने घायलों और मृतकों की संख्या को लेकर जानकारी साझा की है। आइए सुनते हैं। Latest situation of the train accident is like this. So far, around 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in uh, Baleswar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jashpur, and Cuttack districts, including in the two medical colleges of Cuttack and Baleswar. And so far, we have got reports of 233 uh, deaths. 233 dead bodies have been recovered, and the search and rescue operation is still going on. और इस पूरी दुर्घटना में किस तरह से लोग जख्मी हुए हैं, किस तरह से लोग वहां से निकले हैं, किस तरह से उन्हें बचाया गया है, इसे लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। और ये इस दर्दनाक ट्रेन हादसे की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह की वहां स्थिति है। वहां फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी आज सुबह भी यहाँ शवों को निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। घायलों को निकाला गया है। 900 के करीब घायल बताए गए हैं, वहीं 280 के करीब मृतक बताए गए हैं। और ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं जहां ड्रोन के जरिए बीती शाम हुई इस दर्दनाक ट्रेन हादसे को लेकर तस्वीरें साझा की गई हैं। दर्शक देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरह से 3 ट्रेनें यहां टकराई। 2 पैसेंजर ट्रेनें और एक मालगाड़ी आपस में भिड़ गई। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस एक दूसरे से टकराई, जिसके बाद मालगाड़ी यहां बीच में टकरा गई। और आमतौर पर जिस तरह एक पैसेंजर ट्रेन में 3000 से ज्यादा यात्री सवार होते हैं, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी भी कई लोग यहाँ फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और चेन्नई से यहाँ लगातार तैयारियां देखी यहाँ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बचाव कार्य यहाँ चलाए जा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में लोगों से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ओडिशा के बालासोर में बीती शाम 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है और जैसा कि देखा गया है कि इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में हुआ है। ओडिशा में हुए इस ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। काफी ज्यादा लोग घायल हैं और इस हादसे में पश्चिम बंगाल के लोग बड़ी संख्या में प्रभावित है। हादसे की शिकार हुई ट्रेनों में से एक, जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस प्रदेश के शालीमार रेलवे स्टेशन से निकली थी, वहीं दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट को हावड़ा स्टेशन पहुंचना था। ऐसे में जैसे ही ट्रेन हादसे की खबर मिली, लोग दोनों ट्रेनों में सवार अपनों का हाल जानने के लिए बेचैन हैं। खास तौर पर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर ऐसे लोगों की काफी ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है। तो जैसा कि देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें ये जो ट्रेन हादसे की शिकार हुई है ट्रेनें, ये दोनों ट्रेनें जो पैसेंजर ट्रेनें थी वह ज्यादा प्रभावित कर रही हैं ओडिशा और पश्चिम बंगाल को, क्योंकि यह बिल्कुल सीमावर्ती इलाकों में देखी गई है। बालासोर जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच है। तो ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं।
सुबह से ही, बीती शाम से ही यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ओडिशा में जहां आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था, वहीं दूसरी तरफ आज चेन्नई में भी राजकीय शोक की घोषणा की गई है। एमके स्टालिन ने यहां स्थिति का जायजा लिया है। कंट्रोल रूम से वे लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज सुबह ही घटनास्थल पहुंचे और बचाव कार्य का उन्होंने जायजा लिया है। इस बीच मृतकों घायलों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह इस हादसे वाली जगह पहुंचे। इससे पहले ही उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर पहले बताया था कि मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर से जख्मी लोगों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से जख्मी लोगों के लिए 50,000 का ऐलान किया गया है। साथ ही रेल मंत्री ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज पे। बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। तो लगातार यहां हम आपको दिखा रहे हैं जहां कल शाम को 3 ट्रेनें एक दूसरे से टकरा गई और ये तस्वीरें बालासोर से सामने आई हैं। ड्रोन तस्वीरें ये सामने हैं जहां बीती शाम हुए इस हादसे की विभत्सता, वहां के दर्दनाक स्थिति को बयां कर रही हैं। और इस ट्रेन हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। हम लोग चेन्नई जा रहे थे।
चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ? तो 6:50 7 बजे के पहले 10 मिनट पहले। जब ये हादसा हुआ तो आपको कैसा, आप लोगों को कैसा? वो ज्यादा आवाज हो रहा था, हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है। S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 8 आदमी था। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है। ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही। आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 को निकाले सब। बहुत लोग इधर थे, और वो आवाज मतलब जंगल ही हो गया, पूरा पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए, ऐसा हुआ है। प्रशासन को और थोड़ा अच्छा से करने पड़ेगा। यहाँ बता दें कि भारतीय रेलवे ने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 6782-26286, 89720-73925, 93323, 9239, 82459, 91559 और 79784-18322 और 9903370746। इन नंबरों के जरिए कोई भी हेल्प मदद के लिए संपर्क कर सकता है। और एक बार फिर से सुनते हैं अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी तो रेलवे विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं के लिए, चेन्नई के लिए। वो जा रही थी तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए, और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रेंच कर गए। उसके ही थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है, वो आ रही थी। उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रेंच ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। ये इस वक्त रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटा हुआ है। कैजुअलिटीज का अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ, सीरियस इंजरीज हुई हैं। सहायता नंबर इशू किया गया है। हावड़ा का जो हेल्पलाइन नंबर है वो लैंडलाइन नंबर 263-82217, एंड देन खड़गपुर के मोबाइल नंबर्स हैं 897-207-3925। खड़गपुर का दूसरा है 9332392339। ऐसे ही बालेश्वर के 2 नंबर हैं 8249591559, देन दूसरा 7978418322। शालीमार का जो हेल्पलाइन नंबर है 9903370746। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इस घटना के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर सुरक्षा बलों के कई जवान राहत व बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। और इस बीच घायलों के इलाज के लिए ओडिशा के लोग सामने आ रहे हैं। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने दुख जताया। इसके साथ ही विपक्षी दलों में कांग्रेस नेताओं ने भी दुर्घटना पर दुख जताया है। इस दर्दनाक हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया गया है। रेल हादसे को लेकर राष्ट्रपति ने दुख जताते हुए ट्वीट किया और कहा कि ओडिशा के बालासोर में एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। उनका
हृदय शोक संतप्त परिवारों के लिए दुखी है। वे बचाव कार्यों की सफलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल जल्द स्वस्थ हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर उन्हें स्थिति का जायजा लेने को कहा गया है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि इसके तुरंत बाद वैष्णव घटनास्थल के लिए रवाना हुए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना को लेकर बेहद पीड़ादायक बताया। उन्होंने ट्वीट कर शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और इधर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने भी ओडिशा में हुए ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ओडिशा में ट्रेन हादसे और बहुमूल्य जिंदगियां जाने से दुखी हैं। उन्होंने लिखा कि अपनों को खोने वालों का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मृतकों के परिजनों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की वे प्रार्थना करते हैं। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रेल हादसे पर ट्वीट कर कहा कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को हुए भयावह रेल हादसा अत्यंत ही दुखद और मन को शोकाकुल कर देने वाला है। साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस भीषण रेल दुर्घटना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ देश भर में होने वाले अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं आज के लिए। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने को दुखद समाचार बताया है। उन्होंने लिखा कि उनका हृदय शोक संतप्त परिवारों के लिए जाता है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की वे कामना करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करते हैं कि बचाव के लिए प्रयासों के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करें। और सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि अन्य पड़ोसी देशों व दूसरे देशों के प्रधानमंत्री भी इस दुर्घटना पर दुख जता रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल ने भी ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताया है। पीएमओ ने ट्वीट कर लिखा कि भारत के ओडिशा में एक ट्रेन दुर्घटना में दर्जनों लोगों की मौत से वे दुखी हैं। दुख की इस घड़ी में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उधर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स ब्यूरो ने ओडिशा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और सिंगापुर के राजदूत साइमन वोंग ने भी ओडिशा ट्रेन हादसे पर गहरा दुख जताया है। इसी तरह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रेल हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि भारत के ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना की तस्वीरें और रिपोर्ट देखना बेहद ही दर्दनाक है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वे उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस मुश्किल घड़ी में कनाडा के लोग भारत के लोगों के साथ हैं। और इस हादसे में इटली के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने संवेदना दी है। उन्होंने ट्वीट कर बालासोर में हुई दुखद ट्रेन दुर्घटना के लिए इटली सरकार भारत के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ितों और घायलों के लिए वे प्रार्थना करते हैं। फंसे हुए लोगों की जल्द ही बचाने की उम्मीद जताई गई है। और इन सब के बीच अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं इस ट्रेन दुर्घटना को लेकर। बालासोर की इस दुर्घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया जताई है। का रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति।
तो बालासोर में हुए इन तीन ट्रेन हादसे के शिकार में 233 लोगों की मौत हुई है, जबकि 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसे को लेकर पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में भी बदलाव किया गया है। पीएम मोदी आज मुंबई गोवा के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले थे, जिसे स्थगित कर दिया गया है। और इस हादसे पर पीएम ने दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी उन्होंने बात की। और इस हादसे पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कभी नहीं देखी। टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने मिदनापुर से एसडीओ, एसडीपीओ, एडीएम, डॉक्टर आदि को घटनास्थल पर भेजा है। 2 पैसेंजर ट्रेन्स, वन हावड़ा जसवंतपुर, हावड़ा से बेंगलुरु की जुड़ा हुआ, और दूसरा चेन्नई से शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस, फुल जैम पैक। तो 3000 4000 तो 2 पैसेंजर ट्रेन में ही होगा, उसके साथ साथ गुड्स ट्रेन भी था। तीनों का कॉलिशन हुआ और अब देख रहे हैं 20-25 बॉगी पूरा इधर उधर हो गए। इट्स अ टू ट्रेजिक एन इंसिडेंट एंड कुछ कहना नहीं जाता। देखने में बहुत, वी आर शॉक्ड, रियली वी आर शॉक्ड। आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज आल्सो शॉक्ड। उधर घायलों के इलाज के लिए उड़ीसा के लोग अब सामने आने लगे हैं। इलाज के दौरान खून की कमी ना हो, इसके लिए उड़ीसा के भद्राक जिला अस्पताल में वॉलंटियर्स रक्तदान कर रहे हैं। हम जो दुर्घटना हुआ है ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है, इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं। भद्रक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है। 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए। अपना मर्जी सो इच्छा से निस्वार्थ में हमने ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक मेडिकल, कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए, इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए हमारा सो इच्छा से हमने आए हैं ब्लड देने के लिए। मैं ब्लड देने आया यहाँ। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहानागा में, वहाँ कितना आदमी का निहत हुआ है और बाकी इंजर्ड हुए हैं और उनका ब्लड दरकार है इमरजेंसी में, इसीलिए यहाँ आके ब्लड दे रहा हूँ। और इस दर्दनाक रेल हादसे में घायल लोगों में असम का एक युवक भी शामिल है। युवक की पहचान असम के विश्वनाथ निवासी दीपक दास के रूप में हुई है। युवक कोलकाता से चेन्नई की ओर जा रहा था। युवक ने एक वीडियो जारी कर इस भयानक रेल हादसे का आंखों देखा हाल बताया है। उसने मौत को बेहद करीब से देखने की बात कही। युवक ने নমস্কাৰ, মই দীপক দাস। মোৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি, উত্তৰ মলগাঁও। মই যোৱাকালি বেছি দীঘলীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, হাত অকণ অসুস্থ, স্লাইনটো জাষ্ট খুলিছোঁহে। তাতে ইয়াত মানে মেডিকেলত আছোঁ, তথাপিও ইমান সুবিধাজনক নহয়, তলতে ৰাখিছে দেই। মই যোৱাকালি কলকাতা শালিমাৰ ষ্টেচনৰ পৰা চেন্নাইলৈ ওলাইছিলোঁ 3টা 20ত। হঠাৎ আহি থাকোঁতে প্ৰায় 7:30 মান বজাত বালেশ্বৰ ষ্টেচন পাৰ কৰি উৰিষ্যাৰ বালেশ্বৰৰ পৰা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ পিছত হঠাৎ ট্ৰেইনখন তললৈ নামি যোৱা যেন পালোঁ। মানে চিৰিৰ পৰা নামি গ'ল আৰু মই বহি আছিলোঁ খিৰিকী কিনাৰত। মই মোৰ চিটটোকে সাৱটি ধৰিলোঁ, মানে মৃত্যুক দেখা নিচিনা পালোঁ। আৰু মোৰ আগৰ যিবিলাক ডবা অ'ত ত'ত ফুৰি যোৱা দেখিছোঁ, ফুৰি যোৱা। আগফালে এখন ট্ৰেইন আহি আছিলে, সেইখনতে মাৰিলে আৰু ইঞ্জিনটো হেৰিয়ত উঠিলেগৈ, মালগাড়ীৰ ওপৰত, কয়লাৰ ওপৰত। মই ডবাটোতে ধৰি, চিটটোতে ধৰি বাচিলোগৈ যেনে তেনে। মোৰ ট্ৰেইনখনো উলটি গ'ল। মই অহা ডবাটো জংঘলত সোমালেগৈ।
এতিয়া বাচিলো আৰু খালি বুকুত দুখ পাইছোঁ, উশাহ লোৱাত কষ্ট হৈছে, তাৰ বাবে বেজি দিছে 6-7টা। ইয়াত অলপ পিছফালে অলপ দুখ পাইছোঁ, এই হাতটো চিধা কৰিব পৰা নাই, ইয়াতো চিধা কৰিব পৰা নাই, ইয়াতো দুখ পাইছোঁ, ইয়াত চিলাইন দিছে। কাপোৰ অৱস্থা এয়া, বেগ চেগ একো নাই, বেগ ডকুমেণ্টছ একো নাই, বেগতে আছিলে ভোটাৰ ID, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, আনকি হেৰি পৰ্যন্ত ভোটাৰ ভেকচিন কাৰ্ড পৰ্যন্ত চব বেগটোতে থাকিল, বেগটো আনিব নোৱাৰিলোঁ। तो यहाँ लगातार हम दिखा रहे हैं आपको बालासोर में हुए इस ट्रेन हादसे की तस्वीरें, जहां 233 से ज्यादा लोगों के शव अब तक बरामद किए गए हैं। यह संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ 900 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बीती शाम से ही यहाँ बचाव ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की टीम यहाँ NDRF, SDRF के साथ लगातार जुटी हुई है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव स्थिति का जायजा लेने के लिए आज सुबह ही यहां पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौके पर मौजूद रहे। और दूसरी तरफ देश भर से इस दुर्घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और यहां हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, भारत में हुए उन सबसे दर्दनाक रेलवे हादसों के बारे में, जो बिहार रेल हादसा बताया गया है, जहां 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जो इस वक्त पहले नंबर पर बताया गया है, यह हादसा है बालासोर ट्रेन हादसा जो बताया गया है अभी, वहां 233 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले फिरोजाबाद रेलवे हादसा हुआ था, जहां 358 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इसके बाद गैसल ट्रेन हादसा है, जहां 285 लोगों की मारे जाने की खबर थी। इसके बाद बालासोर का यह घटना सामने आया है, जहां 233 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और इन आंकड़ों में अब भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। भारत में ट्रेन हादसों की हम यहां बात कर रहे हैं, जहां बिहार ट्रेन हादसा जो है अब तक का सबसे भयावह ट्रेन हादसा रहा है, जहां 750 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और इसके बाद फिरोजाबाद रेल हादसा था, जहां 358 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये आधिकारिक आंकड़े बताए गए थे। और अगर आंकड़ों के मुताबिक अब तक देखें तो बालासोर ट्रेन हादसा देश में हुए ट्रेन हादसों में चौथे नंबर पर दर्ज किया जा सकता है, अगर यहां मृतकों की संख्या नहीं बढ़ती है। 233 से ज्यादा लोग अभी तक मृतक बताए गए हैं, उनके शव बरामद किए गए हैं। और देश में हुए अब तक के सबसे भयावह ट्रेन हादसों में बिहार रेल हादसा है, जहां 700 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई थी। आधिकारिक आंकड़े बताए गए थे 750 लोग। और इसके बाद दूसरे नंबर पर था फिरोजाबाद रेलवे हादसा, जहां 358 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद गैसल ट्रेन हादसा था, जहां 285 लोग मारे गए थे। और चौथे नंबर पर अगर मृतकों की संख्या नहीं बढ़ती है, अगर मृतकों की संख्या यहां नहीं बढ़ती है, तो बालासोर ट्रेन हादसा
चौथे नंबर पर आता है, जहां 233 लोगों की मौत हुई है। तो बालासोर ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। समिति का गठन करने की बात कही जा रही है। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। उड़ीसा के बालासोर में यह दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है, जहां 2 पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गई। इनमें कोरोमंडल, बेंगलुरु, हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल है। चेन्नई से यह ट्रेन निकली थी जो पश्चिम बंगाल पहुंचनी थी, और दूसरी तरफ सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन यहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उड़ीसा के लोग अब घायलों की सुध लेने के लिए पहुंच रहे हैं। घायलों की मदद के लिए वे यहां रक्तदान कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपातकालीन स्थिति की जानकारी के लिए लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही तमाम बचाव दल यहां लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं बचाव अभियान में। मृतकों की संख्या अभी भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, बालासोर का यह ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट देश के उन सबसे भयानक रेलवे हादसों में अब शुमार हो गया है, जहां 233 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं, और इससे पहले सबसे पहले नंबर पर बिहार का ट्रेन हादसा है, जहां 750 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई थी। और इसी के साथ फिरोजाबाद रेलवे हादसा बताया गया है, जहां 358 लोगों की मौत हुई थी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बालासोर में इस दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान जारी है। तमाम टीमें यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ ही देर पहले यहां स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही देश भर से अब इस घटना पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, दुख जताया जा रहा है, संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और इन सबके बीच चेन्नई में और उड़ीसा में आज 1 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की सभी कार्यक्रम आज के लिए स्थगित कर दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दी है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के घटनास्थल का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री समेत तमाम शीर्ष नेताओं ने स्थिति का जायजा लिया है, उनसे बात की है। और जैसा कि जानकारी सामने आई है, इस हादसे में पश्चिम बंगाल के लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की सुध ले रहे हैं। और दूसरी तरफ एमके स्टालिन चेन्नई के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। चेन्नई से ही यह ट्रेन निकली थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस एमके स्टालिन ने आज कंट्रोल रूम से स्थिति का जायजा लिया है, इस ट्रेन हादसे में फंसे लोगों की जानकारी ली है, और साथ ही उन्होंने बताया है कि वे लगातार ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ संपर्क में हैं। जरूरतमंदों को तमाम मदद मुहैया कराई जा रही है। और इन सबके बीच ओडिशा में भी आज राजकीय शोक का ऐलान किया गया है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लगातार इस घटना से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।
And we start the bulletin with the biggest story of the day. Well, at least 280 persons are dead and more than 900 injured in a major rail accident involving two express trains and a goods train in Balasore district of Odisha last evening. The accident took place at around 7 p.m. when two coaches of the Yeshwantpur Howrah Express derailed near Bahanagar railway station in Balasore district. The derailed coaches tossed over to the adjoining track and hit the speeding Coromandel Express coming from the opposite direction. It led to the derailment of about 17 bogies. A railway official said that several coaches of Bangalore Howrah Superfast Express traveling to Howrah derailed at Bahanaga Bazaar and fell off on the up line. A goods train was also involved in the accident as the coaches of the Coromandel Express hit its wagons after getting derailed, the official said. The rail accident is being described as one of the worst in recent times. Well, the Odisha government has mobilized rescue teams from adjoining districts. Well, Railways Minister Ashwini Vaishnav has solicited the help of the Air Force in the rescue operations, and injured passengers were taken to the hospitals of Gopalpur, Khandapara, Balasore, Bhadrak, and Soro. Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has declared one-day state mourning in view of the tragic rail accidents. Well, the Odisha government has issued the helpline number 06782262286. The railway helplines are 03326382217 for Howrah, 8972073925 for Kharagpur, 8249591559 for Balasore, and 04425330952 for Chennai. Well, Southern Railway has set up a round-the-clock helpline and control office at Chennai. A press release said commuters and relatives could contact the helpline and control office at 04425330952, 04425330953, and 04425354771. Meanwhile, we have reactions from the passengers. Listen in. मैं टाटा पावर बालेश्वर में जॉब कर रहा था, तो आज घर आने का टाइम कोरोमंडल में 640 को ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से। ठीक 6:55 का अंदर बहाना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज आया, तो सोचा क्या, फिर जैसे पलटी हो गया वो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बॉगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला, फिर मेरे साथ जो 3-4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया। फिर ऊपर आके मदद किया कि एक आदमी मेरे को पकड़ के नीचे लेके आया, पानी थोड़ा पिलाया, फिर गाड़ी में बैठ के मेडिकल लेके आया। नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन बहुत लोग तो है, मतलब 200 के आसपास घायल हो चुका है। एम्बुलेंस भी तुरंत आ गए थे और ये फायर स्टेशन भी वो भी लोग इन्फॉर्म किए थे, उन लोग भी आ गए थे। आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। और फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 को निकाले सब। बहुत लोग इधर थे और वो आवाज मतलब जंगली हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए, ऐसा हुआ है। प्रशासन को और थोड़ा अच्छा से करने के लिए पड़ेगा। हम लोग चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ? तो 6:50, 7 बजे के पहले, 10 मिनट पहले। जब ये हादसा हुआ तो आपको कैसा, आप लोगों को कैसा? वो ज्यादा आवाज हो रहा था, हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है, S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा चोट आया था। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 8 आदमी था। Meanwhile, railway authorities have cancelled 49 trains and diverted 38 trains onto a different route. Even as rescue operations are underway at the site of the accident, 20 trains were also short terminated in view of that incident. South Central Railway has cancelled, diverted, and rescheduled several trains following the major train accident. The trains which were cancelled include Howrah SMVT Bangalore, Howrah Chennai Central, Howrah
Secunderabad, Howrah, SMVT Bangalore, Shalimar, Hyderabad, SMVT Bangalore, Guwahati, Chennai Central, Shalimar, and Kanyakumari, Howrah. The Hyderabad Shalimar train has been rescheduled by 180 minutes, according to a release from SCR. So, railway authorities have cancelled 49 trains and diverted 38 trains onto a different route. Even as rescue operations are underway at the site of the train accident, 20 trains were also short terminated in view of the incident. Well, South Central Railway has cancelled, diverted, and rescheduled several trains following the major train accident. Well, the trains which were cancelled include Howrah SMVT Bangalore, Howrah Chennai Central, Howrah Secunderabad, Howrah SMVT Bangalore, Shalimar Hyderabad, SMVT Bangalore, Guwahati, Chennai Central, Shalimar, and Kanyakumari, Howrah. The Hyderabad Shalimar train has been rescheduled by 180 minutes, according to a release from the SCR. Meanwhile, Odisha Chief Minister Navin Patnaik reached Balasore District Hospital to meet the injured. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot. Well, already being termed as one of the worst train mishaps in recent times. So, what are the other rail accidents that took place in recent times that grabbed all the headlines? So, let's take a look at that. So, on July 7th, 2011, Chapra Mathura Express collided with a bus near Etah district in Uttar Pradesh. 69 people died and many were severely injured. The accident took place at around 1:55 a.m. at an unmanned crossing. On July 30th, 2012, a coach of the Delhi-Chennai Tamil Nadu Express caught fire near Nellore, killing more than 30 people. On May 26, 2014, in the Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh, the Gorakhadham Express, which was headed towards Gorakhpur, collided with a halted goods train in Khalilabad station. 25 killed, 50 injured. Well, on March 20th, 2015, Janata Express from Dehradun to Varanasi derailed near Bachrawan railway station in Raebareli in Uttar Pradesh. Over 30 people were killed and around 150 others injured. On November 20th, 2016, the Indore-Patna Express 19321 derailed close to Pokharayan in Kanpur, killing at least 150 passengers and injuring more than 150. On August 19, 2017, the Kalinga Utkal Express running between Haridwar and Puri met with an accident near Khatauli in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. Well, 14 bogies of the train derailed, killing 21 passengers, while 97 were left injured. On August 23rd, 2017, 9 train coaches of the Delhi-bound Kafiyat Express derailed near Auraya, Uttar Pradesh, causing at least 70 injuries. On January 13, 2022, at least 12 coaches of the Bikaner-Guwahati Express derailed in West Bengal's Alipurdwar, killing 9 dead and leaving 36 others injured. So we were speaking strictly in terms of the death toll, which currently stands at 280 and is feared to rise even further. This can be termed as the worst and most tragic train accident in India in recent memory. Well, a passenger hailing from Assam's Tezpur was also on board the Coromandel Express who survived the tragedy. So we have his reaction. Listen in. নমস্কাৰ মই দীপক দাস মোৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি উত্তৰ মলগাঁও মই যোৱাকালি বেছি দীঘলীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ হাত অকণ অসুস্থ স্লাইনটো জাষ্ট খুলিছোঁহে তাতে ইয়াত মানে মেডিকেলত আছোঁ তথাপিও ইমান সুবিধাজনক নহয় তলতে ৰাখিছে দেই মই যোৱাকালি কলকাতা শালিমাৰ ষ্টেচনৰ পৰা
চেন্নাইলৈ ওলাইছিলোঁ 3টা পিছত হঠাৎ আহি থাকোঁতে প্ৰায় 7:30 মান বজাত বালেশ্বৰ ষ্টেচন পাৰ কৰি উৰিষ্যাৰ বালেশ্বৰৰ পৰা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ পিছত হঠাৎ ট্ৰেইনখন তললৈ নামি যোৱা যেন পালোঁ। মানে চিৰিৰ পৰা নামি গ'ল আৰু মই বহি আছিলোঁ খিৰিকী কিনাৰত। মই মোৰ চিটটোকে সাৱটি ধৰিলোঁ। মানে মৃত্যুক দেখা নিচিনা পালোঁ। আৰু মোৰ আগৰ যিবিলাক ডবা অ'ত ত'ত উৰি যোৱা দেখিছোঁ, ফুৰি যোৱা। আগফালে এখন ট্ৰেইন আহি আছিলে, সেইখনতে মাৰিলে আৰু ইঞ্জিনটো হেৰিয়ত উঠিলেগৈ, মালগাড়ীৰ ওপৰত, কয়লাৰ ওপৰত। মই ডবাটোতে চিটটোতে ধৰি বাচিলোগৈ যেন তেনে। মোৰ ট্ৰেইনখনো উলটি গ'ল। মই অহা ডবাটো জংঘলত সোমালেগৈ। এতিয়া বাচিলোঁ আৰু খালি বুকুত দুখ পাইছোঁ, উশাহ লোৱাত কষ্ট হৈছে। তাৰ বাবে বেজি দিছে 6-7টা। ইয়াত পিছফালে অলপ দুখ পাইছোঁ। এই হাতটো চিধা কৰিব পৰা নাই, ইয়াতো দুখ পাইছোঁ। ইয়াত চিলাইন দিছে। কাপোৰৰ অৱস্থা এয়া, বেগ চেগ একো নাই। বেগ ডকুমেণ্টছ একো নাই। বেগতে আছিলে ভোটাৰ ID, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, আনকি হেৰি পৰ্যন্ত, ভোটৰ ভেকচিন কাৰ্ড পৰ্যন্ত চব বেগটোতে থাকিল। বেগটো আনিব নোৱাৰিলোঁ। Railways Minister Ashwini Vaishnaw also reached the accident spot at Balasore, where 3 trains collided last evening, claiming the lives of 280 people and injuring around 900. The Railway Minister took stock of the situation at the accident site, where search and rescue operation is underway. Well, speaking to the media, the railway minister said that it's a big tragic accident. Railway, NDRF, SDRF and state government are conducting rescue operation. Best possible healthcare facilities will be provided. Ashwini said focus is on rescue and relief operations, and restoration will begin after clearance from district administration, and a detailed high-level inquiry will be conducted, and the Rail Safety Commissioner will also do an independent inquiry. Listen in. बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी
गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डिरेलमेंट हुई उसके बाद टक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। Meanwhile, Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw has announced an ex gratia of rupees 10 lakhs in case of death, rupees 2 lakhs for those grievously injured, and rupees 50,000 for those with minor injuries. So 7 NDRF, 5 ODRAF and 24 fire services units, local police and volunteers, they are working tirelessly since last night in search and rescue operation. So search and rescue operations they're underway at this point in time, and 120 bodies have been recovered so far. All right, we have a breaking news coming in. Prime Minister Narendra Modi has called a high-level meeting today to take stock of the horrific tragedy as per sources. So big breaking news coming in at this point in time. Prime Minister Narendra Modi has called a high-level meeting today to take stock of the horrific tragedy as per sources. So a high-level meeting has been called by Prime Minister Narendra Modi regarding the horrific, one of the deadliest train accident that took place in the recent times. So around 900 injured passengers have been taken to hospitals of Gopalpur, Khantapara, Balasore, Bhadrak and Soro. So Prime Minister Narendra Modi called a high-level meeting today over the tragedy. And also let me tell our viewers here that the rescue and search operation is going on at the full swing by 7 SDRF, 5 ODRAF and 24 fire service units, local police and volunteers. And on the other hand, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin also arrived at the State Emergency Operations Center in Chennai, where state government officials are monitoring the Balasore train accident situation. Chief Minister Stalin has also declared one-day state mourning in Tamil Nadu. Well, Tamil Nadu ministers Udhanidhi Stalin, Shiva Shankar and Anbil Mahesh reached Chennai airport. They are traveling to Odisha's Balasore, where the collision took place. All right, so search and rescue operations are underway. 280 people dead so far and 900 injured. So injured people have been shifted to nearby hospitals of Gopalpur, Khantapara, Balasore, Bhadrak and Soro as per the Southeastern Railway officials. So right now, efforts are underway to cut the only bogie left, which was severely damaged after the horrific train accident in Odisha's Balasore. Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has spoken to Odisha Chief Minister Navin Patnaik. Tamil Nadu Minister Udhanidhi Stalin said that hospital facilities are also ready for Tamilians in Tamil Nadu who got affected by the train accident.
And now on to the big story from the region. Manipur Chief Minister N. Biren Singh has termed the confrontation between Assam Rifles and Manipur police personnel at Sugnu on Friday as an unfortunate incident which took place due to a misunderstanding. In a statement released last evening, the Chief Minister called the video of the incident between Assam Rifles and police at Sugnu as unfortunate. Biren Singh said security forces have been working tirelessly in a stressful environment, and the entire incident, which blew up yesterday, was due to a misunderstanding. However, the Chief Minister stated if any forces are at fault, then action will be taken against them. Chief Minister Biren Singh also informed that the incident has been discussed with central leaders as well. He further appealed for peace and not to worry as the entire incident took place due to a misunderstanding. Sugnuda thokiba Assam Rifle tamadi ekoi Manipur Police anigi marakta video channel kharada ulakhiba taunakiba thokiba thogdogodu yama laibak thibani Assam Rifles aduga Manipur Police lairiba CRPF aduga paramilitary forces mayam si tha amamuk chupna yamna tension leiba yamna mafam sadaba mafam singda irang si laksanaba honabada tumba chaba khangdana honariba force ngakani adubu laibak thibadi ngasigi thogdoktu bhap tana hogdaba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯍꯧꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯊꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯗꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯅ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯅꯗꯅ
All right, straight to the biggest story of the day. At least 280 persons